Okay, so till this point, you have already soldered the components and your circuit should be working. So your next assignment is a working circuit video. Now, why this assignment is important? Because once you record a working circuit video, it might happen that during your final exam, your circuit may not work, and at that time you can show this video into your presentation. So that's why this is required. As well as when we submit the paper to the journal, we can give this video to show that this particular circuit is working, so that physically they don't have to verify your circuit. So both the advantage are there, and for that you have to make sure that your circuit is working. Okay, so I will show you some sample, I don't know, some video randomly on YouTube. मे बी ट्रैफिक लाइट, किसी का है क्या आपके यहाँ प्रोजेक्ट ट्रैफिक लाइट का? ठीक है, हेलो गाइस, आज हमने ये 4 बाय ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट्स इज विद बनाया है मॉडलिंग। और अगर आप भी इस अभी प्रोजेक्ट्स को अपना जो बनाना चाहते सर्किट हैं होगा तो वो इसका विद फुल हाउ मॉडल टू नहीं मेक होगा, हमने अपने यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड किया है। वीडियो वहाँ शुड बी से समथिंग देखकर लाइक आप इसे दिस। बना सकते हैं। हेलो गाइस, आज हमने इसमें ये फोर मॉडल बाय भी किया ट्रैफिक हुआ है, लाइट प्रोजेक्ट्स तो बनाया आई है थिंक और वी अगर विल आप लुक भी इस फॉर वन प्रोजेक्ट्स मोर को वीडियो, बनाना चाहते हैं मे तो बी इसका फुल हाउ टू स्टेपर मेक मोटर। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ योर वर्किंग सर्किट वीडियो शुड लुक लाइक। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ मूविंग पार्ट हो, पर somehow you have to prove that your circuit is working, and you have to use whatever components required. You have to solder each and everything onto your project and complete this project before ISC. This working circuit video deadline is 20th September, which is 16 days from now. So I want you to focus and complete the project as soon as possible, because there is a long holiday, I think between some 15th September onwards. So you please complete your project before that. Now, whatever components you get from the college, you use them. Preferably, as I mentioned earlier, that none of the components solder onto the PCB should be of the cost greater than 200 rupees. So if you are using a LCD, Raspberry Pi, ESP, everything will be mounted onto your board using a male to female buck connector. So how a male to female buck connector looks like? They are called male header pins. So इस तरह के मेल फीमेल हेडर पिन दिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ईएसपी में बाय डिफॉल्ट मेल पिन लगे रहते हैं, तो आपके पीसीबी पे आपको सोल्डर करना है ये फीमेल सॉकेट। ये 5 रुपए का वगैरह आता है, सो डेफिनेटली यू कैन अफोर्ड इट। 40 पिन का लेंथी होता है, यू नीड टू कट इट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जनरली ऐसे 40 पिन के पूरे लेंथ मिलते हैं, यू कैन कट इट वेर एवर यू वांट, और उतने पिन लग जाएंगे। Once you solder everything, then you mount your ICs. Before mounting the ICs, please ensure that there is no short onto your tracks. Okay? Once you have your complete working circuit ready, the next assignment will be 3D modeling. So we need to build a 3D case for your product, whatever you are building. So for that we need to use 3D printing. We have 5 3D printers in 507, one 3D printer in 407, and one DLP printer in 514. And then there are two more printers, FDM and SLA, in A building, second floor, 223, I guess, room number. So we have ample number of printers available, but you need to take a print as per your requirement. तो अगर फ्लेक्सिबल प्रिंट चाहिए तो आपको DLP टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा, या FDM विद फ्लेक्सिबल फिलामेंट लेनी पड़ेगी। Regular FDM schools are available with us, so whatever you want to print, you can get it print over here in the college. Now for 3D printing, first you should use 3D CAD model. Many of students are already using the software called Tinkercad. We might have used for the simulation. Now this part will need something called as CAD model, that is mechanical model. So you just log in
I will just show it to you, educators, Google. So once you log in, you will get different options. By default, the original Tinkercad was made for CAD designing only. It is asking all the details. What I will do is I will just change my account. Okay. It will also allow you to install the Tinkercad application through this. So you can install it offline also. Okay. So now it's logged me in. So here you can go to the designs and create a new design. Click on create 3D design. For example, this is the PCB I have in my hand. So you can measure the physical dimensions of this. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है. ठीक है, इसकी हाइट जो है वो एकदम ही कम होगी, 3 mm या 5 mm. और ये जो विड्थ है दैट शुड बी लार्जर देन योर पीसीबी साइज. ठीक है, आप एग्जैक्टली विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो इसमें. ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बन गया. अब इसके अराउंड आपको वॉल्स बिल्ड करने हैं. So I'm not going into the details, but this is how you build your complete drawer or a case in which you are going to keep your PCB. ठीक है, अब इससे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें भी आप कर सकते हो, but somehow I should not see a single wire or your PCB outside. Only displays, buttons will be out on the front end. So I will show you some of the senior 3D printed models also, how it should be. But basically now you will cover up whatever PCB you have made. Okay? So that is the next task. So you need to first build your 3D model and then you need to export it as STL file. .stl is for stereolithography file. Once you export your 3D model as STL file, next you go to this software called Cura. It's a free software. So you import Ultimaker Cura, this is the software name. Import your STL file into this software and select the printer that on which you need to print and start printing the file. So I will just download it now. Maybe it will take some time to download. So this will be your first submission post ISE 3D model, and then after the 1 week you will have to submit a physical 3D printed model. Again, rules will remain the same. आप खुद बनाओगे, खराब बनेगा तो चलेगा, बाहर से नहीं बनवा के लाएगा कोई. ठीक है, जिस तरह से हमने पीसीबी में पकड़ के लिया, आपको जिसने भी बाहर से बना उसको 0 दे दिया, सेम रूल विल अलाउ फॉर 3D printing. It's for your learning. I don't want this thing to be made outside. ठीक है, ये खराब बनेगा, नहीं बनेगा तो भी चलेगा एक बार, लेकिन आपको खुद से करना है. ठीक है, so it will take time. Maybe next time I will record this Ultimaker Pura. But for this video, please ensure that you complete all the tasks. Now coming to the overleaf draft, I have seen some of you are still submitting individual assignments. जैसे अभी सर्किट का सबमिशन था तो कुछ बच्चों ने जेपीजी डाल दी. Everyone has to make that JPG go inside your overleaf and upload the PDF every time. So if your next submission is methodology, I guess, so your methodology needs to be typed, but you are not supposed to upload the typed methodology as a Word file into your submission. You have to upload that methodology into your IEEE overleaf methodology section, recompile the PDF and then upload.
ठीक है. This time we allowed, but here onwards you need, now you are a group. Again, one more thing I forgot to mention in the last video, that whenever you are in the group, जिसका भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है वो ऑथरशिप में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट रहेगा. सेकंड और थर्ड ऑथर यू कैन डिसाइड एज पर देयर कंट्रीब्यूशन, और लास्ट हमेशा गाइड रहेगा या फिर करस्पॉन्डिंग. ठीक है. आपके बैच के लिए मेरा नाम आएगा, बाकी लोगों के लिए अपने अपने करस्पॉन्डिंग बैचेस के जो भी इंचार्जेस हैं उनके नाम आएंगे. और आपको अभी आपका एक बायो प्रोफाइल और बायो पिक फोटो डालना है छोटा सा, और एक 10-15 लाइन का प्रोफाइल लिखना है. तो अब अपने सीनियर्स के SSRM पे पेपर चेक कर लो अपने प्रोजेक्ट के सबमिशन की, एंड यू कैन राइट अकॉर्डिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट सबमिशन विल बी मेथोडोलॉजी. नाउ आप पूछोगे मेथोडोलॉजी किस चीज का लिखेंगे. नाउ यू हैव फॉर्म द ग्रुप्स. अभी एक ही पेपर का लिखेंगे. तो अब तीनों सबमिट क्या करेंगे, 3 सबमिट अलग नहीं होंगे, मतलब तीनों सेम PDF सबमिट करेंगे, क्योंकि आप सारे ग्रुप टास्क है, एक्सेप्ट योर सोल्डरिंग असाइनमेंट विच वाज इंडिविजुअल टास्क. ठीक है. सोल्डरिंग असाइनमेंट तो इंडिविजुअली फोटो डालना है. सारे कंपोनेंट सोल्डर करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छे से किया हुआ सोल्डर, और अगर अच्छे से नहीं हो तो वापस करो, जब तक करते रहो विल गेट दैट कंप्लीटली. ठीक है. वो भी आपके पीसी पे होना जरूरी नहीं है, और आपको सोल्डरिंग आनी चाहिए, दैट इज द पर्पस. So with that I will stop the recording. Next time when Cura will be downloaded, so I will teach you how to import the STL file into the Cura and do the 3D printing. Or I will already have recorded a one video last time, so I will just forward that video to you.